तो 106 मैंने छोड़ दिया था, राइट? तो 106 मैं वापस करता हूँ और मुझे समझ गया इसको एक्चुअल में कैसे करते हैं, यानी इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं। थोड़ा सा अजीब मेथड है बट काम तो करता है एटलीस्ट। सो इस इक्वेशन को मैं इस टाइप से लिख सकता हूँ, 5x पावर 4 dx प्लस 5y पावर 4 dx। ओके कूल। प्लस जो बचा है 2y x³ dy प्लस 2xy³ dx, राइट? और बचा क्या, 3x², सो 3x² y² उसमें तो dx प्लस dy आ जाएगा, dx प्लस dy। कूल। अब ये क्या है? इट्स जस्ट व्हाट, इट्स d ऑफ x पावर 5 प्लस y पावर 5 इन दिस थिंग। इसमें से मैं चीजें कॉमन निकाल सकता हूँ, सो आई थिंक कि मुझे x³ y³ कॉमन निकालना चाहिए था। तो दिस वुड जस्ट बी x³ और लेट्स से मैंने कुछ और कॉमन निकाला तो क्या होगा, आई डोंट नो। उससे डायरेक्टली x³ y³ कॉमन निकाल देना, x³ y³, 2x³ y³ इनफैक्ट। सो यहाँ पे आ जाएगा dy अपॉन वाई स्क्वायर प्लस dx अपॉन एक्स स्क्वायर। और हाँ ये तो ठीक है, ये 3x² y² dx प्लस वाई। अब ये जो चीज है उसको मैं लिख सकता हूँ निगेटिव d ऑफ 1 अपॉन एक्स एंड 1 अपॉन वाई। कूल। राइट, अब इसे मैं क्या करूँ? तो इसको तो मैं प्रॉपर लिख सकता हूँ, राइट? सो dx पावर 5 प्लस y पावर 5, राइट, माइनस 2x³ y³ इंटू, तो ये क्या है, dx प्लस वाई अपॉन एक्स वाई, इसमें भी dx प्लस वाई दैट थिंग अपॉन एक्स वाई। ओके, उसके बाद में प्लस x प्लस वाई और फिर 1 अपॉन एक्स वाई का डेरिवेटिव, सो दैट्स गोइंग टू बी व्हाट, एक्स वाई का स्क्वायर नेगेटिव में आएगा, so x स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड देन d ऑफ एक्स वाई। अब मैं ये ऐसे अजीब टाइप की टर्म्स यूज कर रहा हूँ डिफरेंशियल्स में क्योंकि वो सिमेट्रिक है सिर्फ इसलिए। सो प्लस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस वाई, राइट? और ये हो जाएगा डी एक्स पावर 5 प्लस वाई पावर 5 और लुक माइनस 2x³ y³ अपॉन एक्स वाई, माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर और यहाँ पे प्लस ये, सो प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस वाई एंड देन सिमिलरली यहाँ पे आ जाएगा माइनस 2xy इंटू एक्स प्लस वाई डी एक्स वाई। गुड, लुक एट दैट। इसको मैं यूज कर सकता हूँ, राइट? सो इट कैन बी रिटन एज एक्स प्लस वाई और डी एक्स वाई का स्क्वायर माइनस, सॉरी ये प्लस था क्योंकि माइनस माइनस प्लस, सो राइट, इट्स गोना बी डी एक्स वाई स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बेसिकली। बट लोग यहाँ पे सेम चीज है, सो वी कैन राइट दिस एज डी एक्स पावर 5 प्लस वाई पावर 5 प्लस डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई फुल। तो राइट, ये तो इनफैक्ट सॉल्व होगा क्योंकि ये इक्वल टू 0 है, दिस मींस कि x पावर 5 प्लस y पावर 5 प्लस x³ y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर y क्यूब्ड इज इक्वल टू सम काइंड ऑफ कांस्टेंट। तो या इट्स डन। तो अपने को क्या बोला है, राइट? तो जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन विद द फैमिली ऑफ कर्व्स गिवन बाय rxy इक्वल टू 0, सो ये चीज rxy होगी, इनिशियल वैल्यू ऑफ xy be 0,0, दैट जस्ट मींस कि c 0 होना चाहिए क्योंकि अगर 0 पे y, मतलब x इक्वल टू 0 पे y 0 है, दैट मींस c 0 है। जो फॉलोइंग पॉइंट्स लाई ऑन द कर्व, सो डज 1, -1 lie on it। लोग ये तो ऑड फंक्शन है, so ये तो कैंसिल हो जाएगा एंड दिस थिंग इज गोइंग टू बी +1। ओके, और यहाँ पे -1 आ जाएगा, दैट मींस वो भी कैंसिल हो जाएगा। सो यस इट वर्क्स, 2, -2। लुक लुक लुक, कोई भी इस टाइप का फंक्शन जिसमें एक पॉजिटिव एक निगेटिव और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है वो काम करेगा क्योंकि इस इन सब में, क्योंकि होमोजीनियस है, इन सब में मैग्नीट्यूड वो तो बाहर आ जाएगा। सो 2 पावर 5 बाहर ले लो और फिर हो जाएगा प्लस 1 -1 प्लस 1 -1, दैट वर्क। सिमिलरली ये भी काम करेगा। सो ABC कौन सा 106 का, राइट? ओके 107 की बात करते हैं। 107 is like f be a real valued function defined on the interval 0, infinity by f of x equal to natural log x plus, okay, the initial following statements are all true। तो अच्छा,
इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to x ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 plus sin t dt. पहले तो ऑप्शंस देखते हैं. f dash of x exists for all x belonging to 0 to infinity. आई मीन ये इंटीग्रल तो एग्जिस्ट करता है बिकॉज ये जो चीज रहेगी इट इज काइंड ऑफ पॉजिटिव 1 plus sin t all the time. तो ये डिफाइंड है in fact. Yes, so it does exist for all x belonging to 0 to infinity. It's not differentiable on 0 to infinity. Why not? इसका differentiation अपन कर सकते हैं ना. It's just 1 upon x plus square root of 1 plus sin x. What's the big deal about it? That's what f dash is. So no, it is differentiable. F double dash exists for all x in 0 to infinity. F dash exists and then f double dash also exists, right? What's the big deal? It's just negative 1 upon x square plus उस चीज का डेरिवेटिव तो फिर क्या आ जाएगा 2 square root of 1 plus sin x और फिर sin x का डेरिवेटिव. So yeah, right? Because so cosine does look correct. I mean ये हमेशा डिफाइंड रहने वाला है, ये हमेशा डिफाइंड रहने वाला है. Cosine भी हमेशा डिफाइंड रहेगा. So it's yeah, it does exist. There exists alpha bigger than 1 such that f dash of x is less than f of x for all x belonging to alpha to infinity. Okay. F dash is less than, okay, why is that the case? कोई तो भी एक alpha है such that the slope at that point is less than f of x at that point. F dash being less than f. Okay. ये तो काफी अजीब है. Because ये चीज like kind of like a area है. Look, ये हमेशा increasing रहेगा, right? और 1 upon x, yeah, तो क्या डेरिवेटिव था 1 upon x plus square root of 1 plus sin x, right? तो ये चीज डिक्रीज हो रही है. ये चीज थोड़ी सी से डेविएट होती रहती है कंटिन्यूस, बट इसमें कुछ खास चेंजेस नहीं है. बट ये जो चीज है नेचुरल लॉग x प्लस के इंटीग्रल, ये कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है. सो एक ऐसा पॉइंट तो आएगा ही ऑब्वियसली जब ये बहुत बड़ा हो जाएगा और ये जो f dash of x रहेगा वो उतना बड़ा नहीं होगा. And that means yes, can exist alpha bigger than 1 such that this happens for all x belonging to alpha obviously. Yeah. So 107C is also correct. There exists beta bigger than 0 such that f of x plus f dash of x is less than beta for all x belonging to 0 to infinity. Wait, what? No. Look, f of x का magnitude जो है वो okay 0 to infinity. Wait, what? तो ऐसी कोई तो भी ऐसे कोई तो भी इसकी मैक्सिमम लिमिट रहने वाली है, ऐसा बोल रहे हो? That doesn't make sense. इसकी तो कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है. x equal to infinity पुट करो यहाँ पे, यार सब कुछ ठीक हो जाएगा. नहीं, इसकी कोई ऐसे मैक्सिमम लिमिट थोड़ी होगी. No, D is just incorrect. So C works, A works, B works, A, B, C. Next question, 108. Okay, let 0 to infinity e power negative x. यार ये जो चीज है ये ऑब्वियसली ये सॉल्वेबल नहीं है. इसको तुम एलिमेंट्री फॉर्म में नहीं लिख सकते हो इसके एंडर डेरिवेटिव को. दैट मींस अपने को कुछ प्रॉपर्टीज यूज करनी पड़ेगी. इक्वल टू a and I n be equal to this thing, then I n may be. तो अपने को एक रिकर्शन ढूंढना है. Got it. So what do you think? Integration by parts. Yeah. So let's say कि अपन okay, ये काम n belong नेचुरल नंबर हो सकता है कि n 2 से बड़ा कुछ भी हो सकता है, राइट? ओके, व्हाट आई एम थिंकिंग इज कि हम इसको इस टाइप से ब्रेक कर सकते हैं. x पावर n minus 1 times x, क्योंकि अगर नेचुरल नंबर है तो फिर n minus 1 तो एटलीस्ट होल नंबर होगा. एंड देन e पावर नेगेटिव x पर, तो फिर इसका जो इंटीग्रेशन रहेगा दैट विल जस्ट बी नेगेटिव यहाँ पे 2x चाहिए, राइट? सो नेगेटिव 1 upon 2 e पावर नेगेटिव x स्क्वायर, राइट? That times this thing, so x power n minus 1, and then ये चाहता है 0 to infinity. So yeah, 0 पे तो वो 0 हो ही जाएगा. Okay, अगर n minus 1 somehow 0 हो जाता है, मतलब n equal to 1 हो जाता है,
In case n equal to 1, then it's just x e power negative x square. Oh, यहाँ पे n minus 2 factorial वगैरह अपन यूज कर सकते हैं. So let's say कि n is not 1, right? Let's say कि n is bigger than or equal to 2. In that case अपन सब कुछ कर पाएंगे. But what if n does become equal to 1? तो उसके लिए एक पूरा अलग केस रहेगा. Anyway, when n becomes equal to sorry, अगर n बड़ा है 1 से, then when x becomes equal to 0, ये पूरी चीज चली जाएगी, just becomes 0. और infinity पे क्या आने वाला है? Just becomes negative 1/2 e power. well, ये चीज infinity अप्रोच कर रही है, बट ये चीज infinity नहीं अप्रोच कर रही है. सॉरी, ये 0 अप्रोच कर रहा है और ये 0 नहीं अप्रोच कर रहा है, ये infinity अप्रोच कर रहा है. It's automatic thing. Taylor expansion something. No, it just won't work. We have to prove that this thing actually does work. This is just really bad. यार यहाँ तो मैं वो चीज भी नहीं हो सकता कि ये cannot write like that. क्योंकि ये चीज infinity अप्रोच कर रही है. Then okay, so it's x power n minus 1 upon e power x square. Sure. कौन सा बड़ा रहेगा? अपने को डेरिवेटिव वगैरह देखनी पड़ेगी. So I guess the e power x square is bigger than x power n minus 1 as x approaches infinity. Why? Because e power x square that times 2x that's bigger than oh okay, so ये चलते तो जाएगा. मतलब यहाँ पे तुम्हें x की पावर बढ़ते हुए मिलेगी और यहाँ पे तुम्हें x की पावर घटते हुए मिलेगी. तो ये दोनों चीजें इक्विवेलेंट है, बट तुम इस टाइप से इक्विवेलेंसीज या तुम ऐसे चलते जा सकते हो इसमें. एंड देन तुम्हें एक पॉइंट पे दिखेगा कि हाँ, यहाँ पे e पावर x स्क्वायर टाइम्स बहुत सारी चीजें हैं, राइट? x की बहुत सारी पावर्स है और यहाँ पे तो इनफैक्ट कुछ भी नहीं है. तो या x की पावर्स नहीं है अब. और एंड दैट वुड मीन कि हाँ, ये चीज फाइनाइट कुछ तो भी अप्रोच करेगी. और ये चीज क्योंकि अगर n फाइनाइट है, ये कितने तो भी डेरिवेटिव लेने के बाद में 0 हो जाएगा. एंड फ्रॉम दैट यू कैन बैक ट्रैक कि हाँ, दैट जस्ट मीन्स की पावर x स्क्वायर इज डेफिनेटली more than this thing, actually much more, because वो चीज yeah. So ये चीज it's like 1 upon infinity, तो ये 0 हो जाएगा. तो infinity पे 0 हो रहा है और 0 पे भी 0 हो रहा है, तो ये तो पूरी चीज गई, राइट? ओके. और जो बचा हुआ पार्ट रहेगा उसे अपन डिफरेंशिएशन वगैरह करना है. सो पॉजिटिव 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ e पावर नेगेटिव x स्क्वायर और फिर इसका डिफरेंशिएशन करूंगा. सो n-1 x पावर n-2. ऑफ कोर्स तुम्हें n-2 लगने ही वाला था, तो फिर ये सही असम्पशन था कि n-1 इज देयर, इट्स समथिंग, इट्स नॉट 0. इन दैट केस ये हो जाएगा प्लस n-1/2 इंटीग्रेशन ऑफ e पावर नेगेटिव x स्क्वायर and x power n-2 dx and goes from 0 to infinity, of course. So basically क्या हो गया, हमने एक रिकर्शन सेट कर दिया कि in is equal to n-1/2 times I n-1, and then you can just keep on going. Sorry, not -1, it should be -2 right there, right? Which means it's like n-1 into n-3 next time अपॉन 4 और चलते जाओ. सो बेसिकली कितने में 2 पावर n-1 या उतने मिलेंगे. सो हर केस में n-2 पे जा रहा है. दैट्स अ प्रॉब्लमेटिक थिंग यार, राइट? अपन डेरिवेटिव ये तो करेक्ट है, तो बहुत करेक्ट है. सो इट्स नॉट 2 पावर n-1, इज इट? डजंट फील लाइक दैट. ये जो चीज रहेगी n-1 into n-3 into n-5 चलते जाओगे तुम अपॉन 2, राइट? अपने को ये ढूंढना है इसका ऑल ऑफ दैट टाइम्स a, ऑफ कोर्स, राइट? एंड ऑड है कि इवन ऐसा कुछ अपने को दिया है क्या? आई डोंट थिंक सो. तो सब चलते जाएंगे और एक पॉइंट के बाद में a मिलेगा. यहाँ पे n की पावर 0, राइट? ओके, तो अगर n लुक
अगर एन ऑड नंबर है देन ये काम करेगा, राइट? यू कैन डेफिनेटली राइट आई एन लाइक दिस, बट अगर वो इवन नंबर है देन व्हाट, देन वी आर काइंड ऑफ स्टक, राइट? क्योंकि अपने को फिर फाइनली क्या मिलेगा? अपने को मिलेगा 2 पहले तो, और उसके बाद में नहीं, 2 तो अपने को ऑड नंबर के टाइप में मिलेगा, अपने को मिलेगा 1। सो इंटीग्रेशन ऑफ 0 to infinity of e power negative x square times x dx, what will that be basically? Hey, क्या ये सॉल्वेबल नहीं है क्या? हाँ, ये सॉल्वेबल है। So, oh wow, this is nice, I guess. So it's gonna be what? Half of यहाँ पे 2 और, right? So, is this actually correct though? I think it is correct. X square, then of course, so it's gonna be negative 1 upon 2 e power negative x square. It goes from 0 to infinity. तो जीरो पे क्या, जीरो पे तो ये वन नेगेटिव 1 अपॉन 2 चलता है, टिल इंफिनिटी इज गोना बी 1। सो कई बार तुम्हें ए मिलेगा ही नहीं इनफैक्ट, सो इट मे बी, अच्छा अपने को दोनों दोनों के लिए करना पड़ेगा। सो ओके, दिस इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। सो ये चीज यहाँ पे ए रहेगा इफ, ओके ओके लेट्स डू इट, आई एन इक्वल टू ऑल ऑफ दिस इफ एन ऑड एंड आई एन इक्वल टू n minus 1 upon 2 n minus 3 upon 2 चलते जाओ till you eventually just get negative 1 upon 2, because यहाँ पे तुम wait, not negative 1 upon 2, positive 1 upon 2, positive 1 upon 2, yes, and eventually you will just get 4 upon 2 like that. So hey, and that's like I1 is equal to 1 upon 2, which makes perfect sense. तो यहाँ पे सारे odd numbers मिलने वाले हैं anyway, that means कि तुम्हें यहाँ पे भी oh yeah makes sense, राइट श्योर। तो अपने को सिर्फ एक क्लोज फॉर्म में लिखना है इसको। सो n-2 n-4 बस जो सारे मिसिंग हैं उनको क्यों नहीं अपन यहाँ पे रख देते, देन इट विल जस्ट बी n-1 फैक्टोरियल अपॉन, ओह या, सो n-2 और वो सारी जो चीजें हैं वो सारे इवन, नो वेट, नो ओके दिस इज डिफरेंट। अपन डायरेक्टली ऐसा कर सकते हैं कि इसको n-1 upon 2 n-3, ये सारे भी इंटीजर्स रखे क्योंकि n-1 इज इवन, दैट मींस कि इट्स जस्ट n-1 upon 2 का फैक्टोरियल दैट टाइम्स a। ओह या, सो a लुक्स करेक्ट एक्सेप्ट यहाँ पे हाफ क्यों आ गया, ये एक्स्ट्रा हाफ कैसा है यहाँ पे? आई डोंट नो, इवेंचुअली तुम्हें I2 मिलने वाला है। क्या ये रिकर्जन सही नहीं है? आई मीन इट शुड बी, अगर n2 रहा था इट विल गो टू इनफिनिटी, या पूरा सही से काम करेगा, देन इट शुड नॉट बी हैविंग दैट हाफ ओवर हियर। ऐसा कैसे हो गया? एक्चुअली में 1 मिल रहा था, राइट? नहीं यार, यहाँ पे हाफ की कोई ऐसी जरूरत तो नहीं है, फिर ऐसा क्यों? दिस इज -1 upon 2 दिख रहा है यहाँ पे, व्हाट, व्हाई इज दिस देयर? It should just be n-1 upon 2 I n-2 और तुम चलते जाओगे, right? Till eventually you would get I2 और फिर I2 को तुम लिखोगे, या I2 को तुम लिख सकते हो 1 upon 2 I0, right? and I0 is just a, तो ये तो काम करना चाहिए ना, सॉरी ये तो ऑड के लिए तुम्हें इवेंचुअली I3 मिलेगा, तुम I3 को लिखोगे, I3 को तुम लिखोगे 3 - 1 2, फिर 2 upon 2 and then I1, wait what, I1, no, तुम n-1 से स्टार्ट करो, राइट? तो तुम्हें सारे इवन नंबर से मिल रहा है यार, मैं क्या कर रहा हूँ। हाँ, तुम्हें इवेंचुअली एक इवन मिलेगा, सो I समथिंग इवन एंड तो I2 आएगा लास्ट में, फिर तुम I2 को लिखोगे हाफ प्लस 1, राइट? देन I0, राइट? सो नहीं, यहाँ पे हाफ की जरूरत नहीं है, ये ऐसी दे दिया इन लोगों ने, सो इट्स नॉट करेक्ट। और जो दूसरी चीज है दैट इज
जब n even है then you can write it like this. So ये सारे भी जो है, तो सारे फैक्टोरियल ही है basically. Then what is it? It's just n minus 1 upon, नहीं ये फैक्टोरियल नहीं, यहाँ पे n minus 1 एक और नंबर आएगा and so on. So no, it's not like that. Okay, so this can be written as what? N minus 1 factorial अपॉन n माइनस 2 इंटू n माइनस 4 चलते जाओ, तुम्हें इवेंचुअली 1 तो मिलने वाला है. सो लास्ट जो चीज रहेगी दैट विल बी 2, एंड देन ऑफ कोर्स 2 पावर जितने भी ये थे, या कितने थे ये, n माइनस 1 से स्टार्ट हो रहा है ये, n माइनस 1 अपॉन 2 राइट, नहीं n माइनस 1 एक और नंबर रहेगा. सो n माइनस 1 and goes from 1 to that. Two m minus 1 equal to that. n is equal to n upon 2. तो यहाँ पे n upon 2 आएगा. और इस केस में कितने टूज आने वाले हैं, तो इन सब से तुम 2 निकाल सकते हो बाहर राइट. तो अब यहाँ पे 1 नहीं आएगा, यहाँ पे 2 आएगा. तो इसमें से कितने 2 बाहर आएगी, इट्स जस्ट n minus 1 upon 2 राइट, सॉरी n minus 2 upon 2. तो प्लस n minus, so n upon 2 minus 1 basically. So yeah, n minus 1 factorial upon 2 upon n minus 1, and then n minus 2 upon 2 factorial, and that is B. No, इसमें A भी जोड़ दिया तुम लोगों ने, पागलपन है. D is correct I think. Yes, so सिर्फ D correct है, 108 का सिर्फ D. Next is 109. 109 is in a triangle AEX. T is the midpoint of XE. P is the midpoint of ET. If ABE is equilateral of side length equal to unity. AEX एक triangle है. T is the midpoint of XE. XE का midpoint क्या है? T. Okay. P is the midpoint of ET. Okay, this thing is P. If triangle APE is equilateral, wait, what? APE. Okay, let's just start with an equilateral triangle. फिर अपन मास देखेंगे. Yeah, equilateral triangle चाहिए मुझे. Right. और फिर मैं ये इसको एक्सटेंड कर सकता हूँ. तो एग्जैक्टली इतनी लेंथ यानी कि कुछ तो भी यहाँ पे आएगा, और फिर इसको एक्सटेंड कर दो, देन एग्जैक्टली इतनी लेंथ यानी कि भी यहाँ पे. सो दिस वुड बी ए T T X, right? Side length equal to unity. Okay, then should the following alternative is all correct. So अपने को AX ढूंढना है. अच्छा, सारी चीजें ढूंढनी है basically. Coordinate geometry maybe. Yeah, this could actually work. So let's say कि nah, whatever. Actually अपन कर भी सकते हैं, क्या जाने. So ये जो रहेगा दिस विल जस्ट बी हाफ हाफ. इसको ब्रेक करो स्टेप से, ये रहेगा स्क्वायर रूट 3 अपॉन 2 राइट. सो यू कैन से कि a इज जस्ट 0. अगर मैं इसको ओरिजिन मान लूं देन इट्स 0 कॉमा स्क्वायर रूट 3 अपॉन 2. दिस थिंग इज this thing p is just 0 comma 1 upon 2, right? T will be 0 comma 1 upon 2 plus 1 because yeah, so 0 comma 3 upon 2, and then this will be plus 2, so 0 comma 7 upon 2, right? And now we are ready to figure out कि क्या करना है. अपने को ax ढूंढना है, पहले तो ax ढूंढ लेते हैं. सो ax is just square root of इसका स्क्वायर 3 upon 4 प्लस, मतलब अपन 2 बाहर निकाल सकते हैं anyway. So half power, then 3 plus 7 squared is 49, so it's going to be what, half of square root of 52 I think. 49 plus 3, right? 4 का multiple है, yes, so it's going to be square root of 1 and then 13. So square root 13, so A is correct, 109 का A. और एंगल EAT equal to 90 degree. EAT equal to 90 degree. Why? I don't know. ये एंगल कितना है?
So look, ये जो पूरा है, ये जो पूरी length है, it's just 3/2 and this is square root 3/2. That means this angle is actually 9. This angle is 60 degrees and this angle is 30 degrees. Yes, it is actually correct. It is 90 degree. Right, that means like P is the center of, okay, get it. So B is correct. And then cosine of angle XAE. XAE is, हाँ वो 90 डिग्री नहीं है, वो उससे थोड़ा अलग रहेगा. That is -1 upon square root 30. Well, तुम्हें पता है कि ये जो चीज है that is square root 30, right? Okay. And हाँ, this angle is 90 degrees. अपने को क्या चाहिए? अपने को चाहिए XAE, ये एंगल. Not the best choice. Well, okay, yeah, you can just look at this angle in that case, because this is what 90 plus that angle, and cosine of 90 plus something is just negative sine of this angle in that case, and sine of this angle is just 30 degrees, so it's 1/2, so it's going to be -1/2. So this is not correct in fact. Wait, this is, sorry, no, ये angle 90 degree है, so it's going to be 90 plus this angle. This is getting bad. So cosine of this angle, that's going to be this length. नहीं यार, ये बहुत गंदा हो रहा है. क्या करो? कोसाइन लॉ काम कर सकता है, राइट? तो ये जो पूरी लेंथ है, इट्स जस्ट 1 + 1 + 2, आई थिंक, सो इट्स 4. सो 4 स्क्वायर इज 16, 16 इक्वल टू 1 प्लस ये चीज का स्क्वायर इज 13, ओके, माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 13 cosine of whatever this angle is, called this thing theta. Then cosine theta is just what, 2. Okay, this is -1/30 as we expected. So yes, this is also correct. So C is correct. Next, 80 equal to 1/√3. 80 is 1/√3. I mean, this thing is √3/2 and this thing is what, it's just 3/2. So एक काम करो, फिर स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 बाहर निकालो, just 1 + 3 basically, because √3 का square, and that means yeah, this thing is just √3, not 1/√3. Okay, so this is wrong. Then yeah, it's just this much. Next, तो 110. यार आज मैं स्लो कर रहा हूँ सब कुछ. If f of x equal to this, then limit as x tends to 0 of f of x plus, okay, integer part of f of x plus x. Well, first of all, we know that tan x upon x is bigger than 1 for sure. This is bad. But hey, as x tends to 0, this thing approaches 1 plus, right? So ये जो रहेगा, it just approaches 1. Yeah. Okay, so it's just 1. Yeah, 1 plus, right, एक certain range के अंदर ये चीज 1 हो जाती है, या यानी 1 point something, so इसका greatest differential 1 रहेगा. So 1 plus x square to the power of 1 basically, because this thing is just, hey, no, that's not, oh, this is a fractional part. So basically f of x minus 1. So what you're saying is just 1 plus x squared and then 1 upon tan x upon x minus 1. This is what we want to find. So 1 plus x squared. Hey, this approach is what? Okay, yeah, this is really good. So 1 plus x squared and 1 upon x squared, और फिर उसकी power, oops, x squared upon ये सारी गंदी सी चीज, which is what, tan x minus x, ऊपर x जाएगा, so just x cube, और फिर मैं टेलर एक्सपांशन यूज कर सकता हूँ, right, for tan x. Hopefully this will work. So look, ये तो पूरा का पूरा e अप्रोच करने वाला है, so just e पावर ये सारी गंदी चीज. तो ये क्या अप्रोच करता है? tan x का टेलर एक्सपांशन लिखना पड़ेगा. tan x equal to, okay, so 0 पे क्या 0 वैल्यू लेना लिया. Okay, f dash of secant square x. Secant square x at 0 is just 1, so it's going to be 1 upon, okay, this is getting really bad, 1 upon 1 factorial times x, okay, plus secant square x का derivative, it's going to be 2 secant x and tan x, or at x equal to 0, this
This is not defined. Shit. No, wait, it is actually 0. Sorry. क्या कर रहा हूँ यार मैं? Caught me. Tan. So it's defined and it's 0. So 0 x square. Right. और third derivative यानी कि मुझे 2 secant x tan x का derivative ढूंढना है, which is okay 2 secant x tan squared x plus 2 secant cube x, I think, because it's got derivative, yes. So just 2 secant x tan square x plus secant square x, whatever साइन से काम नहीं करता है. So first of all x equal to 0 पे कर देना अपन, तो ये चीज तो पूरी गई, ये चीज गई, and 2 secant cube x, it approaches what, 2 basically, and x approaches 0, right? So approach क्या बोल रहा हूँ, x equal to 0 पे ये है 2, so it's just 2, यहाँ पे 2 factorial चाहिए था, upon 3 factorial, because 0 factorial, 1 factorial, 2 factorial, 3 factorial, x cube, right? तो लोग ये तो माइनस एक्स करे तो ये तो गया, ये तो था ही नहीं, so it's just this thing 2/3 factorial, यहाँ पे पूरा सिर्फ वही आ जाएगा. This thing is just what, 3 factorial upon 2, well that just means 3 basically, so it's e power 3 I think. Then 110 का c, one and one, a variable circle touches two distinct given circles of radii r1 and r2. दो सर्कल्स के रेडियाई दिए हैं, उसको टच कर रहा है. Locus of center of the circle depending on the two circles. Wait, what? It just touches it, right? So whatever, यहाँ पे जो point रहेगा, कुछ तो भी रेडियस रहेगा, whatever. ये डिस्टेंस कांस्टेंट है. This is r, this is r, right? This is r1 plus r2. The thing is कि ये जो दो डिस्टेंसेस का subtraction है, that's a constant, that is r1 minus r2. So yeah, it's just a hyperbola basically. Yeah, in fact, it will always be hyperbola. Wait. हो सकता है कि इंटरनली टच कर रहा हो और ऐसा कुछ भी हो. In that case कुछ अलग हो सकता है शायद से. कोई और तरह से क्या टच कर सकता है? I don't know, but these two will be the foci and it should work out actually. Why won't it work? Like, oh wait, hyperbola में दो साइडेड फिगर, राइट? तो ये सिर्फ हाइपरबोला का आधा पार्ट ही रहेगा, बट एटलीस्ट वी नो इट्स हाइपरबोला. ओके, और हो सकता है कि वो इंटरनली टच कर रहा हो. इन दैट केस लेट्स से ये तुम्हारा पहला सर्कल है, दूसरा सर्कल इस टाइप का कुछ तो भी है, और अगर ये इंटरनली टच कर रहा है देन दैट मीन्स कि व्हाट, पहला डिस्टेंस इसके सेंटर से दैट विल जस्ट बी r1 minus r, right? एंड जो दूसरा डिस्टेंस रहेगा इसके सेंटर से दैट विल जस्ट बी r plus r2, right? एंड दैट मीन्स कि उनका जो एडिशन है डिस्टेंसेस का, दैट्स अ कांस्टेंट. सो वो एक इलिप्स रहेगा और एक हाइपरबोला भी हो सकता है. सो c and d आई थिंक. और कुछ तरीके से हो सकता है. और हाँ, अगर ये डिस्टेंस का डिफरेंस एक कांस्टेंट यानी 0 रहा, समहाउ अगर वो 0 रहा, राइट? हाँ, अगर ये 0 रहा, मतलब r1 minus r2 is 0, then this would just be straight line, right? तो स्ट्रेट लाइन हो सकता है, एलिप्स हो सकता है, हाइपरबोला हो सकता है. क्या ये सर्कल हो सकता है? नहीं, सर्कल में ऐसी कोई प्रॉपर्टी मुझे दिखती नहीं है. देन इट्स जस्ट a, c and d. One by 2 to 3 by 2 sine inverse of x minus 2x plus 3.2. 3.2x sine inverse y from 1/2 to 3.22. Wait, what? इसकी मिनिमम वैल्यू कहाँ पे रहेगी? इसकी मिनिमम वैल्यू रहती है, oh okay, you could write like that. So it's just integration of, so x minus 1 squared plus 1/2 है ये चीज, right? So it's just sine inverse of
let's say 1 upon 2 plus u squared, जहाँ पे x minus 1 को मैंने u रख दिया, then as when x is 1 upon 2, you would just be uh, x minus 1, right? So 1 upon 2 minus 1. Uh, yeah, it's just negative 1 upon 2. So negative 1 upon 2 say it goes to 1 upon 2 because 3 upon 2 minus 1. So yeah, and then du. No, come on. And just use squared. So it's like half plus. Right. So maximum value क्या use करके 1/4. So 1 by 2 plus 1/4. That is 3/4. And 3/4 is less than 1. That means कि अपन हमेशा first quadrant के अंदर ही बात कर रहे हैं. Okay, that's at least nice. तो इसका कैसे करना पड़ेगा? अब क्या? इस टाइप से मैंने लिख दिया बस इतना ही. No way. Need to go further than that. 1 upon 2 you say. इसका स्क्वायर करने वाले हैं, right? Sine inverse. Why does it look so weird? Okay, whatever. इसको अपन partial क्या क्या कर था? Additional parts कर सकते हैं, right? So 1 into ये सारी चीज. Let's say कि अपन इसको differentiate करते हैं, इसको integrate करते हैं, this should be x. Yeah. Wait a second. क्या ये एक even function नहीं है? It is an even function, right? So we can actually write this as 2 times वो सारी चीज. So 2 from 0 to 1 upon 2 and this thing. But does it even make a difference? X sine inverse of 1 upon 2 plus u squared. Oh, sorry. I should not say x. I should say u. Minus. और इसका derivative, which is what? Square root of. Right? Sine inverse x का derivative क्या होता है? 1 upon square root of 1 minus x square, right? क्या करना आज में? So 1 minus this thing का square. This is just really bad. Okay, and then फिर इसका derivative आ जाएगा. That would just be 2u and then du like that. Okay. Okay, अब क्या? ऐसे लिखना तो आसान है, बट इसका मैं यूज कैसे करूंगा आखिर? u squared. This is really bad. Right, ये उस टाइप का हो जाएगा. This doesn't make sense. इतना पूरा करने से अच्छा है कि अपन कोई टाइप का. Oh wait, अपने को सिर्फ inequalities देखनी है. क्यों करा था मैं इतना सब? अपने को सिर्फ inequalities देखनी है. So it's bigger than something, less than something, something like that. So sine inverse of something that is definitely bigger than the same thing, right? Yeah, क्योंकि ये 0 to 1 पे जा रहा है, ये 0 to pi upon से जा रहा है. हाँ, ऐसा ही होता है. What that means is like this thing is actually bigger than 2 integration from 0 to 1 upon 2 of 1 by 2 plus u squared, right? So let's just 0 to 1 upon 2, 1 plus u squared, so like 2u squared. 1 upon 2 plus, okay, so 2u cube upon 3, 2 into 1 upon 2 ka cube is just this thing, and then upon 3. So 1 upon 2 plus 1 upon 4 means 1 upon 12 like that. So 7 upon 12, right? It's bigger than 7 upon 12. And pi upon 6, what the hell? Sine inverse of 3 upon 4. Why? Okay, it's bigger than something like that. Sine inverse of 1 upon 2 is just pi upon 6, isn't that right? So 1 upon 2 plus u squared. So sine inverse इससे बड़ा होगा, right? So it's bigger than 2 integration from 0 to 1 upon 2 of pi upon 6, which is pi upon 6, of course. So A is actually correct. But एक अलग टाइप से किया इन लोगों ने, थोड़ी कम स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी रहेगी ये तो, या फिर क्या पता शायद से ज़्यादा स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी हो सकती है. एनीवे, और क्या? Is this bigger than sine inverse of 3 upon 4? 3 upon 4. What? 3 upon 4. Oh yeah, so its maximum value is just that. So this thing is actually less than 2 integration from 0 to 1 upon 2 sine inverse of 3 upon 4, right?
then yes, it actually does work out. So it's less than that. So D works, okay, A works, D works, pi upon 8. Why pi upon 8? हाँ, I don't know. हमने अभी कहा कि पाई अपॉन 6 से बड़ा होना चाहिए, तो फिर पाई अपॉन 8 से छोटा कैसे सकता है? सो दैट्स इट. 113 का करते. 113 is which of the following expressions have their value equal to 4 times the area of triangle ABC, also possibly whatever. 4 times the area of triangle ABC. So RS same perimeter times, okay, that's just area one of, okay, तो ये तो एक एरिया हो ही गया. Then R1 as well as A. So ये x सेंटर की बात कर रहे हैं ना. Then right, R1 into S minus A. Well, S minus A is, I think I've seen this somewhere. S minus A would be what? देखा सा लग रहा है. Well, I can actually, okay, I think R1 into S minus A is equal to, right, because look, यहाँ पे ये A upon 2 रहेगा, और जहाँ पे भी ये टच कर रहा है यहाँ पे 90 डिग्री रहेगा, and this complete thing is just the same perimeter, right? We know that because, yeah, I mean, this thing is of course just this side, okay. Yeah, this thing is just say this is A, B, C, and this would just be C, okay, and this is whatever this thing is. और ये अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, right? It's just going to be S minus, seriously, look, ये भी in fact C ही रहेगा सिर्फ, right? और ये जो दोनों चीजें रहेगी वो इक्वल होनी चाहिए anyway. Then that just means कि okay, so 2 times of whatever this length is, or 2 times of tangent, that is equal to ये length plus ये length, which should just be B, not C. So it should be C plus B plus ये चीज यानी कि A. So yes, it's just the same perimeter. So yeah, that works out. So that whole thing is just same perimeter. So अपने को क्या चाहिए? अपने को चाहिए S minus A. S minus A, that is very different. Okay. S minus A would be, नहीं, यहाँ पे काम नहीं करेगा. R1 into S minus A, हाँ. So you know कि R1 is just, okay, और yeah, this thing is semi perimeter, और यहाँ पे R1 है, so R1 is just semi perimeter times tan of A upon 2, but you also know that S minus A is small r into cot of A upon 2, right? Then अगर मैं इनको multiply कर दूँ, that just gives us कि S minus A times R1, that's equal to R times S. So yes, it's also the perimeter, sorry, area, yeah. This is also the area, and this is also the area, and this is also the area, and it is in fact 4 times area. So A works. Let's go to the next one. Next we have ये सारी चीज. Okay, so A squared plus B squared plus C squared cos squared. Hey, yeah, you know how it is done. So cot A by 2 is just small a upon R cos A is R cot A upon 2. Then okay, seriously, it's just like A plus B plus C upon, बस वो तो कट जाएगा. This is just the radius basically, isn't right? Sorry, not like that. It should be times R. So नहीं यार, ये तो सिर्फ 2 times of area है, because यहाँ पे तुम्हें A plus B plus C upon R मिलेगा, वो R ऊपर जाएगा, ये A plus B plus C कट जाएगा, and then just like, oh no, sorry, it should be S minus A and S minus B. So C. So it's going to be 3S minus A plus B plus C. But guess what? 3S is, oh wait, it's just 3S minus 2S. So it's just going to be S. So A plus B plus C, which is basically 2S squared. So just 4S squared upon S. And then R goes on the top. Now it looks correct. So cot A upon 2 is not A upon R. It's S minus A upon R. Sorry. Yeah, then it is in fact 4 times the area. So it also works. Next. C is A squared plus B squared minus C squared, that times tan of B. So you know we can write C squared as
Wait, why is this tan of B right there? Why not C? Doesn't look very correct, you know. So, for example, अगर मैं एक equilateral triangle लूँ जिसमें 1 1 1 रहेगा and then just so side length 1 and then the area is of course just square root 3 upon 4. And is this square root 3 upon 4? This is what 1 into square root 3. That is not correct. Wait, actually yeah, it's just 4 times the area. But ऐसे मैं प्रूव कैसे करूँ कि ये 4 times area है in every circle का? So C why is this having the square someone what C square to say let's say मैं b square को a square plus c square वो सब में लिखता हूँ then how will this change it? It's going to be a square plus so it's going to be what a square plus c square to cancel होने वाला है so minus 2 ac cosine of b, right? And that times tan of b, I think. Yeah, so this will be what to a common ले लो then it's just a minus cosine of b was sorry a minus c cosine of b, oops, that times tan of b. Isn't that correct? To a sine, okay whatever, that is tan of b like that. So geometry देखना पड़ेगा. So इसमें b बहुत यूज हो रहा है ना. Let's see, ये तुम्हारा a है, यहाँ पे तुम्हारा b रहेगा, ये तुम्हारा b है, ये तुम्हारा c है, राइट? सो जब अपन c कोसाइन b बोल रहे हैं तो अपन ये पार्ट की बात कर रहे हैं. a minus c कोसाइन b is just this thing and then of course this has to be 90, this has to be 90 minus b. हाँ, तो ये पार्ट से क्या रिलेशन इसका? And then that times tan b. Why this part? No, that doesn't make sense. क्या लग रहा है? A minus c cosine b, so it's just this small thing that times a. It's not helping actually. ये एंगल क्या, एंगल c रहेगा and अगर ये tan c होता then this would have actually worked, right? But यहाँ पे tan c थोड़ी ना, यहाँ पे सिर्फ tan b है. Then how will this actually work? Because अपन एक b squared को in terms of yeah, so this should work and it's like this is just that and yeah, अगर ये tan b होता then this would just be this length times that length and 2, so it would have worked. But currently ये work नहीं करेगा. तो मुझे इसको डिस्प्रूव करने के लिए काउंटर एग्जांपल चाहिए. When c is not equal to b it doesn't work, right? So let's go for a 90 90 45 triangle, right? 90 90 45 triangle and we'll say okay b जो है वो angle 45 degree है, then that tan b is just 1. So this is going to be b square minus c square will be cancelled anyway because वो equal हो जाएगा. okay, let's say a जो है वो 90 degree वाला angle है, then it's just square root 2 का square, so 2 and the area is 1/4. It doesn't work. Come on, why is this happening? तब मैंने अभी भी प्रूव किया कि काम नहीं करना चाहिए. Then how is it working? Sorry, इस केस में मैंने b equal to c ले लिया, which is not something that should. So in fact, let's take it like this. ये b है, ये c है और ये a है. तो a पे एंगल 45 डिग्री है, ये एंगल 45 डिग्री है. दिस इज 1 1. एरिया ऑब्वियसली 1/2 रहने वाला है. अब कैलकुलेट करते हैं. So a squared, that's just 1 squared, plus c squared is 2 and then minus b squared, so it's oops, plus b squared बना सकते थे. So b squared is also just 1 and then minus c squared is just minus 2. Oh yeah, it's not going to work. ये तो 0 हो गया and then tan b is of course just 1. तो ये डिफाइंड है, ऐसा कुछ नहीं कि ये 0 times infinity हो रहा है. This is actually just 0. Done. In fact ये भी क्या, कोई भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट देख लो, कोई भी तुम पाइथागोरियन ट्रिपलेट देख लो, ये काम करेगा, यानी 0 हो जाएगा, राइट? तो दैट मींस ये काम नहीं करता है.
So C doesn't work. B works. What about this guy? B squared sine 2C plus C squared sine 2B. 2C and 2B. Okay. Why not look at इसको ऐसे दे सकते हैं ना अपन कि 2B squared sine C and what cosine C, okay, plus 2C squared sine B, then cosine B. Oh yeah, of course. And then you of course know कि मैं triangle draw करता हूँ. This is B, this thing is C, this thing is angle B, this thing is angle C. Then B sine C is just the height. Call this thing H. So this would just be 2 times of H, right? So B sine C, and then B cosine C is just this length, and then C cosine B is just this length. C cosine C is also that. So it's going to be this length plus that length, just A. So just 2HA, and that is very correct. It's going to work. ABD, huh? Next. 114. Slope of a line through this point such that these lines cut off an intercept of length 5 units from it, maybe. एक line है इस point के through such that these two lines cut off an intercept of 5 units from it. Okay, x plus 2y plus 1 equal to 0. X plus 2y equal to 1. तो ये दो parallel lines है basically. Of length 5 units. उसका slope देखना पड़ेगा that is actually happens. Perpendicular distance कितना है इन दोनों के बीच में? It's just 2 upon square root of 5, right? So what you want is the 5 square root of, right? This will be the perpendicular distance. और इस perpendicular distance से थोड़ा अपने को बड़ा करना है, तो कितना डेविएट हुआ स्लोप अपने को देखना है, राइट? Which how much 5 square root 5 upon 2, राइट? तो इतना डेविएट करना है अपने को. और जो एक्चुअल में परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला स्लोप था वो कितना था? दैट वाज, तो ये तो पैरेलल लाइन से इनका स्लोप इज जस्ट -1 upon 2, राइट? तो इसका स्लोप जो रहेगा दैट विल जस्ट बी 2 एग्जैक्टली. सो ये स्लोप 2 रहेगा, और फिर अगर उसको इस टाइप से डेविएट कर दूं तो ये 5 square 5. इनफैक्ट मैं उल्टा भी कर सकता हूँ, राइट? सो लेट्स से दिस थिंग इज व्हाट, दिस थिंग इज, ये कितने से अपन ने मल्टीप्लाई किया, ये वो चीज है, राइट? तो ये जो चीज रहेगी दैट विल बी 5 square 5 upon 2 एंड समथिंग लाइक दैट, राइट? तो इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर सकता हूँ लाइक वेक्टर, बट यू नो मैं शिफ्ट नहीं कर सकते, बट मैं कर रहा हूँ. दिस विल बी 5 square 5 upon 2. तो यहाँ पे जो भी अपने डेविएशन की दैट विल, इसको मैं अल्फा बोलता हूँ, इस चीज को मैं थीटा बोलूंगा. सो tan अल्फा, दैट not tan alpha actually, cosine alpha. So cosine of alpha, that is just 2 upon sorry, that is what, yeah, 2 upon 5 square root 5, because 2 से अपने को, so ये slope 2 है यार. हाँ, ये slope 2 है, ये जो distance है that's just 2 upon square root 5. So 2 upon square root 5 से अपन ये square root से अपन 5 पे जा रहे हैं, that just means कि, right, it's 2 upon square root 5 upon 5. That's what cosine alpha. Got it. अपने को अल्फा मिल गया, अपने को थीटा पता है, so tan theta equal to 2, and what we need to find is just tan of theta plus alpha. Right, ये बहुत अजीब होता है. तो थिंग इज कि अल्फा ओके एक्यूट में दिख रहा है एंड स्टफ, तो नॉट दैट बैड, अपन tan अल्फा ढूंढ सकते हैं, राइट? So for tan alpha, this is what, 2 5 square root 5, something like that. So tan alpha के लिए ये चीज ढूंढनी पड़ेगी, square root of 125 minus 4, 121. Hey, nice, just 11. So tan alpha is 11 upon 2. तो अपने को करना है actually plus minus 11 upon 2, because yeah, अपन उल्टा भी डेविएट कर सकते हैं ना, तो प्लस माइनस 11 अपॉन 2.
then tan of alpha plus theta is just, let's do it, 2 plus minus 11 upon 2 upon 2 minus plus 11, exactly, which, sorry, not 2, it's only 1 right there. So 2 से multiply करो, just 4 plus minus 11 upon 2 plus minus 22, right? So अगर मैं प्लस लेता हूँ then it would be 45, sorry यार मैं क्या कर रहा हूँ, 15 upon 24, और अगर मैं माइनस लेता हूँ then it's going to be negative 7 upon negative 20, right? 7 upon 20 और अदरवाइज 5 upon 8, ये दो स्लोप्स मिले अपने को. So 5 upon 8 and not 7 upon 24. No, that's not. Oops, minus plus यार. माइनस प्लस. अगर मैं यहाँ पे प्लस ले रहा हूँ देन यहाँ पे मुझे उल्टा लेना पड़ेगा. Right, so let's say when plus लेते then what? 15 upon negative 20, I think. And that will just be negative 3 upon 4. तो negative 3 upon 4 एक स्लोप है. So D works. अदरवाइज अगर आप यहाँ पे प्लस लेते हैं, सॉरी माइनस लेते देन नेगेटिव 7 अपॉन, यहाँ पे मुझे प्लस लेना पड़ेगा, दैट इज 40, सॉरी नॉट 24 आई थिंक, यस, 7 upon 24, negative 7 upon 24. So B and D. Okay, I think that's enough. Should stop. So I'll see you guys in the next video.